हेलो हेलो, डी डे आ गया है, कप फाइनल डे। और बहुत सारा हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। आई नो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यस, थैंक्स अ लॉट फर्स्टली पैनल एंड ऑफ कोर्स पीपल जॉइनिंग इन द चैट। होप आप लोग सब जो देख रहे हैं लाइक कर दे स्ट्रीम को, और चेक करें डिस्क्रिप्शन फॉर फुटबॉल मेडिको, फॉर ड्रॉग बाबा, इंडी कॉप एंड आदिदेव गुरुज्ञान। डेफिनेटली आदिदेव जी, दैट इज गुरु जी हमारे, और नितिका विल बी जॉइनिंग इन अ फ्यू मिनट्स। But first and foremost, just to let you all know, first of all, स्पेशल थैंक्स आज पैनल और चैट के लिए वापस, क्योंकि आज एपिसोड 200 है ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। मैंने अभी देखा, एंड दैट इज ऑब्वियसली Congratulations भैया, congratulations. Congratulations. possible. Absolutely, and panel और chat definitely have been very supportive. लेकिन of course they great day to have that, क्योंकि फाइनल है लिवरपूल चेल्सी। तो बाबा पहले आप पर आते हैं, $1 million क्वेश्चन। आई नो हम लाइनअप पे आएंगे 2 मिनट में, लेकिन ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया था चैनल पे, यू डिस्कस इन योर चैनल, रोमन हैंडिंग ओवर स्टुअर्डशिप टू चेल्सी चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको लगता है ये न्यूज आवर्स अर्लियर आई है, तो सर्टेनली लाइनअप्स पे भी असर पड़ेगा? मे बी ही हैज गॉन विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स और विद यंगस्टर्स, क्योंकि वो केयर फ्री रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से वो बोला गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जा रही स्टुअर्डशिप, मतलब वही है कि आज किसी ने बहुत बड़ा बढ़िया कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि पबजी का नाम बीजीएमआई कर दिया, बाकी तो सब सेम है। Perfectly summed. हाँ, तो वही है, तो सेम चीज है। मतलब एक कॉल ही तो करना है कि आ जाओ भाई, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है, चैरिटेबल ट्रस्ट करता रहे। तो आई डोंट थिंक कि उस सबसे इतना फर्क पड़ेगा। उल्टा ये अच्छा, मतलब एक चीज किया है इसने। मतलब अब टीम जो है वो सिर्फ गेम पे फोकस कर सकती। जो अनसर्टेनिटी है वो तो हमने किल कर दी गेम से पहले, जो भी थी ओनरशिप को लेके अब्रामोविच की। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ज्यादा ऑन फील्ड फर्क पड़ेगा उस चीज का। तो सही है, मतलब मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मतलब एडमिट तो किया है टूकल ने, इट हैज अफेक्टेड प्रिपरेशंस, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन हाँ, टूकल जो मैन मैनेजर है, होपफुली ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। एंड ऑफ कोर्स यस, हम आएंगे लाइनअप पे नेक्स्ट। लेकिन चिराग, क्विक क्वेश्चन टू यू एज वेल। डू यू थिंक, मतलब टीम टॉक में टूकल ने रिमाइंड किया होगा आज एफए कप फाइनल के बारे में या रीसेंट सक्सेसेस के बारे में, ईदर ऑफ देम, और बीइंग अंडरडॉग सूट्स अस? डोंट यू थिंक सो? See, definitely we are the underdogs, and मतलब जैसे कल बाबा ने भी बोला था, ऐसी सिचुएशंस में चेल्सी क्लचेस इट, एंड वी आल्सो डोंट नो कि ये कैसे होता है, कि वो क्लच कैसे कर जाता है, ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में चेल्सी कर जाती है। बट one thing we have to remember is last time Liverpool played a final, that was like 2 years back, if I'm not wrong. Club World Cup final was their last final, and हमारा भी was like 15 दिन पहले. We have played a number of finals, so we have that big match mentality right now. हम उस फेज में है कि we know how to clutch in those crucial moments, how to hold up at those crucial moments. So I'm very excited for the match, and I trust my team. Obviously, I trust my team, and let's see what happens. यस यस, ऑफ कोर्स लिवरपूल फैंस भी आ गए हाउस में, एंड होपफुली आप लोग भी स्ट्रीम को लाइक करें। एंड यस, नितिका भी आने वाली है इन फ्यू मिनट्स एज इज गुरुजी। लेकिन हाँ, लाइनअप्स आर आउट, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, एंड इट इज सर्टनली बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब सर्टनली टू सम एक्सटेंट हमने प्रीव्यू किया था, एंड लॉट ऑफ देम वी वर एक्सपेक्टिंग। लेकिन एनीवे, लेट्स लुक एट इट। आई होप यू आर एबल टू सी this is what the lineup is from what I believe. Again, I think 3-4-3 जा रहे चेल्सी, and of course Liverpool with the traditional 4-3-3. गोलकीपर बिग कॉल, ऑब्वियसली हम ज्यादातर लोग वही बोल रहे थे कि मेंडी को खिलाना चाहिए। लेकिन बाबा, डू यू थिंक लाइक इज एब्सोल्युटली राइट सिलेक्शन? एंड केपा आप देखते हो कि आएंगे एज अ सुपर सब इफ नीड बी? हाँ, अगर पेनल्टीज में जाता है गेम तो डेफिनेटली। इसमें एक्स्ट्रा टाइम है क्या फाइनल में, या सीधा इसमें? यस, फाइनल में है एक्स्ट्रा टाइम। ओके, क्योंकि बाकी कैराबो गेम्स कप में नहीं होता ना, आई थिंक सो। आई थिंक फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम है, बाकी गेम्स तो डायरेक्ट पेनल्टीज पे जाते हैं। डायरेक्ट पेनल्टीज गए थे, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा कुछ है। तो ठीक है, अगर वैसा कुछ होता है तो वी माइट सी केपा, बट टीम सिलेक्शन प्रीटी मच हैप्पी। वुड हैव एब्सोल्युटली लव टू सी रीस जेम्स, बट ऑब्वियसली मतलब अभी तो आया ही है वो, तो कुछ मतलब नहीं है एक्सपेक्ट कर सकते इतनी जल्दी कि बंदा स्टार्ट करेगा। बट कांटे कोवाचिच मैसिव। और मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में, व्हाई नो जीएच। मैं बताता हूँ व्हाई नो जीएच, बिकॉज वी नीड दैट एनर्जी एंड दैट प्रेजेंस ऑफ माउंट, क्रिएटिविटी माउंट की अपफ्रंट, जो कि जीएच कभी-कभी लैक करता है। वो फिजिकलिटी, वो इंटेंसिटी जो
लिवरपूल जो जिस तरीके से हाई अग्रेसिव प्रेस करती है ना, उसको काउंटर प्रेस करने के लिए हमें माउंट और पुलिसिक का वो चाहिए आगे। और पुलिसिक इज इन अ गुड पैच अभी थोड़ा सा, मतलब पिछले 2-3 मैच वो अच्छा खेला, गोल भी मारा था लील के अगेंस्ट लास्ट गेम में। राइट देन हैवर्ट्स भी अच्छा है, हैज बीन स्कोरिंग फॉर अस रिसेंटली। तो आई थिंक फॉर्म को देखते हुए और अपोनेंट को देखते हुए दिस इज द परफेक्ट सिलेक्शन। हाँ, आप कह सकते हो जीएच, यू कैन मेक अ केस ऑफ जीएच, बट आई थिंक 99% दिस सिलेक्शन इज क्वाइट नहीं, बट बाबा जीएच बेंच इंजर्ड पर भी भी है। है। हाँ, हाँ, जीएच जीएच इंजर्ड ही है। हाँ, जीएच भी तो हाँ, मतलब right. अगर वो फुल्ली फिट नहीं है तो वैसे ही स्टार्ट नहीं कर सकता ना वो। एंड ऑल्सो एक और चीज ऐड करने के लिए, माउंट इज अ वेरी एंटी रेजिस्टेंट प्लेयर। मतलब जब सामने वाली टीम प्रेस कर रही हो तो एंटी प्रेसिंग प्लेयर वो माउंट है। ही कैन गिव यू दैट बूस्ट अप, एज बाबा ने कहा कि तुम्हें बॉल पोजीशन वापस रीगेन करने में हेल्प कर सकता है। एंड व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक माउंट, वो क्विक डिस्ट्रीब्यूशन से यू कैन प्रिवेंट दैट प्रेसिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन टीम। दैट लिवरपूल विल डू, ऑब्वियसली दैट इज देयर ट्रेडिशनल गेम, आई से। हाँ, मतलब अगेन लिवरपूल की लाइनअप तो लाइक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो बिग सरप्राइजेस देयर। ऑब्वियसली आई थिंक बेंच हमने देखा है, तो बेंच पे एक्चुअली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोटा इज ऑन द बेंच, तो वो एक बूस्ट है उनके लिए इन टर्म्स ऑफ इंजरी। लेकिन अगेन आई थिंक अ कपल ऑफ प्लेयर्स आर मिसिंग इन, आई थिंक कर्टिस जोन्स शायद मिस की है, ही माइट बी इंजर्ड, एंड सो इज हार्वी एलियट, तो हार्वी वो एलियट एंड थोड़ा सा कर्टिस जोन्स बोथ। करेक्ट, एंड that might be a miss, but coming to Chirag, like again, मतलब हमारी डिफेंस की बात करें, like you know, it's absolutely fantastic on paper, लेकिन Pablo Escobar हम जानते ही है, मतलब he has his moments in final, not to be spoken of enough. मैन, मिथ, द मैं लेजेंड। नहीं बोलता पाब्लो एस्कोबार के बारे में बाबा, आपके ऊपर। बोलना भी नहीं मत। नहीं, पाब्लो लेकिन एस्कोबार कुछ नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है चिराग, लेकिन व्हाट्स द बेस्ट वे कंट्रोल करने के लिए ना ये लिवरपूल का जो फॉरवर्ड है ना, मतलब आपको लगता है कि ना शुड वी एक्चुअली गो कॉम्पैक्ट, मे बी यू नो विदाउट द बॉल हम 5 एट द बैक खिलाएंगे एंड काइंड ऑफ हिट ऑन द काउंटर, और बेसिकली यू नो मतलब क्रॉसिंग की बात करें तो अब लुकाकू नहीं है, ऑब्वियसली विल कम टू दैट, लेकिन डू यू थिंक विद अलोंसो बीइंग देयर एंड एसपी बीइंग एज विंग बैक्स रादर देन फुल बैक्स, वो क्रॉसिंग इज समथिंग दैट वी शुड ट्राई मोर और वी शुड गेट फॉरवर्ड और जस्ट स्टे बैक? व्हाट इज योर अप्रोच गोइंग टू बी? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट आवर डिफेंस, ही पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हु प्लेज द नंबर 9 वाला पोजीशन, मतलब फॉल्स 9 वाला रोल फॉर लिवरपूल। अगर फर्मिनियो जोटा नहीं होते तो दे आर वेरी फ्लूइड विद इट। माने एंड डियाज मे बी आपको वो एक्सचेंज करते हुए दिख जाएंगे, बट वन थिंग आई एम, मतलब सबको ही पता है कि साला वर्सेस अलोंसो, दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड मैचअप एज ऑलवेज। वो उसको इनसाइड आउट खोल सकता है, बट माय अप्रोच फॉर दिस गेम विल बी जो हम पहली गेम में अप्रोच में गए थे, द गेम दैट वी ड्रू 1-1 इवन आफ्टर दैट रेड कार्ड, वही अप्रोच रखें, सिट बैक करें एंड अब्सॉर्बिंग द प्रेशर, वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमें पता है लिवरपूल डेस्परेट हो जाएगी इफ वो उनको 10 मिनट भी आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया तो। एंड लुकाकू एंड जेम्स का, प्रियांश सेड इट वेरी करेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट लुकाकू जस्ट टू मैच द फिजिकलिटी जो मैटिप एंड वैन डाइक के पास है, बट ऑब्वियसली हैवर्ट्स इज द गाय इन फॉर्म एंड वो ड्रॉप नहीं हो सकता था, सो वी आर गोइंग विद हैवर्ट्स अलोंगसाइड पुलिसिक एंड माउंट। सो अब हम उनको सब्स्टिट्यूट की तरह लाके, दैट कुड बी आवर प्लान बी और सी टू स्कोर अ गोल। इन केस हमने गोल नहीं मारा तो वी कैन ब्रिंग बोथ जेम्स एंड लुकाकू एंड वी विल सी दैट क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाली, that is not a strategy but obviously cross and inshallah. मतलब that is basically the sought after you know plan, मतलब वही लगता है मुझे। like again you know let's look at the bench people जो late join किए, by the way people जो भी late join किए है, let's like the stream, आप please check the description, check for football medico, you know please subscribe अगर आप नहीं किए हैं, और rock baba come on, and Adidev गुरुज्ञान as well as you know indie cop जो भी join करने वाले हैं हमें। लेकिन हाँ ये बेंच है, अगेन जो लोग ने नहीं देखा है, इंटरेस्टिंग। बैक टू द स्टार्टिंग लाइनअप, लेकिन बाबा लाइक चालोबा, हम लिवरपूल पाएंगे लेकिन चालोबा getting the start over Christensen, मतलब what is this strategy? Christensen recent match में I think he was quite impressive ना, but I चालोबा think हार्डली खेला है। थोड़ा बॉल प्लेइंग चाहिए हमको पीछे से, तो टू एक्सपोज देयर हाई लाइन, बिकॉज वी विल हैव टू पेसी गाइज अप टॉप, माउंट एंड पुलिसिक, तो वो थोड़ा सा हमको एक एडवांटेज मिलता है। चालोबा और सिल्वा और रूडिगर तीनों ही बॉल प्लेइंग, बॉल कैरिंग सेंटर बैक्स हैं, तो पीछे से जो है हमारी क्रिएटिविटी काफी सही हो जाती है चालोबा के आने से। चालोबा इज अ डिसेंट डिफेंडर यार, मतलब ऑब्वियसली पीपल विल पॉइंट आउट टू द मिस्टेक दैट ही कमिटेड अगेंस्ट माने वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में जो हुआ था, बट आई थिंक यही एक अप्रोच है कि क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे तो एस्पिलिक्वेटर, अलोंसो वो वाला इंसिजन नहीं प्रोवाइड करते हैं जो चिलवेल और रीस जेम्स लेके आते हैं, तो वहां से लेफ्ट से रूडिगर भी थोड़ा सा क्रिएटिव फोर्स रहेगा, राइट से चालोबा रहेगा,
वो बैलेंस आउट करने की हम कोशिश करेंगे उस चीज को। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ गुड सिलेक्शन इन माय ओपिनियन। एंड यस, मतलब ये कंफर्म करते हो Hello क्रिश्चियनसन को everyone, एटलीस्ट hi. नहीं चाहिए। हाय नितिका, वेलकम Hello. टू द स्ट्रीम। ऑफ कोर्स ये लाइनअप्स है, मतलब आई डोंट नो, लाइक यू नो, मोर और लेस आई थिंक लिवरपूल का लाइनअप तो सर्टेनली हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे नितिका, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर स्पीकिंग टू यू द अदर डे। लेकिन मुझे मतलब एक थोड़ा था क्वेश्चन, कि मतलब मुझे था थोड़ा कोनाटे शुरू करे, बस उस पे था थोड़ा उधर, एंड कीटा पे था, बट देन आई एम हैप्पी हेंडो है। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट्स में थोड़ा ठीक रहेगा। Right, absolutely. And again, people watching on Nitika के लिए भी, this is actually a very special episode for Almighty Blues FC. It's episode number 200. So, you know, great to have you on the panel, Nitika, and of course, जो भी join किया है, please check out IndieCop as well, people, or like the stream, it helps. लेकिन तो Konate is a great point, क्योंकि Matip starts, maybe जैसे हमने बात की थी यार, Matip getting that goal and that experience level, you know, जो है cup final के लिए, maybe those are reasons. और Konate, इज इट समथिंग दैट मे बी जो हुआ था लीग गेम में कोनाटे वर्सेस कांटे, वो रीजन हो सकता है? क्या लगता है, व्हाई नो कोनाटे? बिकॉज सबको ये लग रहा था ही वाज रेस्टेड बिकॉज ही वुड बी प्लेइंग टुडे ना। Yeah, I think that Klopp is going to go with somebody he trusts more right now, and he's using more. I have seen that a lot in Klopp's games, in selection whenever there are big matches. In a way, I think I'm happy also that he didn't change a lot, because if Konate had been there, obviously I wanted Konate there because of the pace and the physicality that he has. But since he chose Matip, means he's going for more experience, and something like what Van Dijk and Matip have been doing a lot in Premier League now. कितना कॉन्फिडेंस है दोनों साथ में जब खेलते हैं, एंड दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. बट अगर इन दोनों को शुरू करवाना था, देन आई वुड हैव गॉन फॉर एलिसन एट द बैक. बट सिंस वी आर गोइंग फॉर केलहर, सो मतलब थोड़ा वैसा लग रहा है. बाकी आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी. अभी तो बस मैच शुरू होने वाला है, उसका डर है, बाकी ठीक है. Then certainly we'll get to the goalkeeper situation in Liverpool. क्या वहाँ पर as a weakness है if at all. लेकिन बाबा, coming back to actually Chelsea team ना, क्योंकि midfield का देखो यार, लिवरपूल में technically there are 3, वो हो सकते हैं compact हो जाए, Chelsea के 2 ही है. And we know league game में भी हुआ था, लेकिन जो recent game हुआ था, I think against Palace, or was it against Lille, जहाँ Tuchel said that he had to bring in one more extra person in midfield. तो आप देखते हो कि मे बी बिकॉज कोवाचिच 100% फिट हो सकता है, नहीं है, लेट्स होप दैट ही इज 100% फिट, कि मे बी पुलिसिक इज गोना ड्रॉप बैक और माउंट में। हाँ, मुझे तो लगता है हैवर्ट्स ड्रॉप करेगा थोड़ा सा, मतलब वो फॉल्स 9 वाली पोजीशन में। पुलिसिक विल बी प्रोवाइडिंग अस द विड्थ, क्योंकि हाई लाइन लिवरपूल की है, तो वी नीड वन प्लेयर ऑन देयर शोल्डर ऑलवेज, जो पुलिसिक ने किया भी था स्टैमफोर्ड ब्रिज में जब हमारा मैच हुआ था इनके अगेंस्ट। तो आई थिंक वी वुड सी माउंट क्या बोल रहा हूँ, वी वुड सी हैवर्ट्स बीइंग दैट फोकल पॉइंट, एंड ही वुड बी एक्टिंग एज दैट क्रिएटिव फोर्स, जिसके अराउंड माउंट और पुलिसिक खेलेंगे। और यहाँ पर गेम जो है थोड़ा सा आज डायरेक्ट देखने को मिल सकता है अपन को चेल्सी से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरलोड करेंगे हम कोई भी साइड, क्योंकि उस तरीके के प्लेयर्स हैं हमारे पास, उस मतलब केमिस्ट्री के उस डायमेंशन के सेम प्लेयर एक विंग पे खेलेंगे ओवरलोड करने के लिए। तो वी माइट सी अ लॉट ऑफ डायरेक्ट गेम टुडे, और वो वर्क किया है लिवरपूल के अगेंस्ट। चाहे आपने एनफील्ड में भी जो हमने इनको हराया था लास्ट सीजन, आपको याद हो तो, इट वाज अ डायरेक्ट बॉल फ्रॉम जॉर्जिनियो या कांटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो माउंट ने गोल मारा था। तो डायरेक्ट प्ले ऑलवेज हर्ट्स लिवरपूल बिकॉज दे प्ले अ वेरी हाई लाइन। तो वो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत मतलब हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये लाइनअप देख के। बिल्कुल, लुकाकू खेलता तो मैं हड़ताल पे चला जाता, जैसे अब सब यार बाबा, लाइक डेफिनेटली आज तो मतलब बनता था, मतलब वही मैं बात कर रहा था। फिजिकलिटी के लिए नहीं खिलाते आप? अरे फिजिकलिटी के लिए फर्स्ट मैच अच्छा खेला था वो। अरे फिजिकलिटी एलिमिनेट कर देनी है ना हमने गेम से, इनकी हाई लाइन को बाईपास करके। फिजिकल भाई, तुम वैन डाइक को गेम में ही नहीं लाओगे तो तुम मतलब, तुम मेरे को एक बात बता, स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी जब मैच हुआ था, वैन डाइक इन्वॉल्व ही नहीं था दोनों गोल जो हुए थे। हाँ, नहीं था, ठीक है ना, वैन डाइक कुछ कर ही नहीं सकता था उन दोनों, तो वो एलिमिनेट करना है वैन डाइक को हमको। अगर हम एक बंदा सिर्फ उनके 2 सेंटर बैक्स ऑक्यूपाई करने में लगा देंगे ना, तो हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और फिर मिडफील्ड ओवरलोड भी नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर टीवी पर तो एमटीवी पर आएगा इंडिया में, दैट इज 10 बजे शुरू होगा, और इसलिए मैं प्री शो कर रहा हूँ।
as an experiment. I hope आप लोगों को सब अच्छा लगे, especially with this panel यार, come on, because यार I don't know what is it in India यार, मतलब Carabao Cup को थोड़ा भी नहीं देते importance, like कोई pre show नहीं यार, हम लोग को बुला लो, we'll be happy to go, I'm pretty sure on that. लेकिन coming to the teams again, like I think चिराग, अब ये बात कर रहे थे basically, crowding the midfield etc. So which is that duel midfield में जो you are really looking forward to, and you think वो midfield में main battle होगा for you? Over the 2 or 3 days, I have been with a number of Liverpool supporters deciding the best 11s, and Kante and Fabinho की जो इन्होंने लड़ाइयाँ कराई है ना, I really want to see. This is an open battle going for, मतलब वो face to face नहीं जाएंगे, obviously they have different roles, but I want to see who can play what role and who has the better big match mentality, because Kante की तो मैं I can say he is the guy for the finals, he is the guy to step up on the big matches. Yeah, मतलब वो तो मतलब not a secret anymore, लेकिन let's hope कि Kante has one of those games, especially I think Nitika will not hope that. लेकिन नितिका, I think यहाँ पर I think सादिक भाई ने बोला था about Alisson, Liverpool may miss Alisson. मतलब I know Keller has been great, and we were speaking the other day on my podcast as well, like about अगर Keller को खिला रहे, then why not their forwards जो Mino etc. So you can say that it's not kind of comparable नहीं है. Goalkeeping situation is totally different, but Keller ke, like, do you see any weakness? Because for sure Alisson is a miss, right? I mean, if given a choice, what would you have done अगर आपको choose करना होता तो? I would have definitely gone for Ellison in this match because he is that big game player. So that's what he did against Napoli, if you remember, जब हमारा उनके साथ चैंपियंस लीग में मैच था, जिस तरीके से उसने सेव लास्ट मोमेंट। अरे म्यूट तो कर ले। चलो कोई नहीं, हमें सुन गया। तो उस तरीके से मतलब एलिसन इज दैट बिग गेम प्लेयर, सो आई वुड हैव loved it अगर आज एलिसन होता, इवन दो केलर हैज बीन परफॉर्मिंग ट्रेमेंडसली वेल लिवरपूल के लिए, बहुत बहुत बढ़िया खेल रहा है, ही हैज बीन लर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स दैट देयर इज, सो उस तरीके से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो नहीं होता है जो अटैकिंग थ्रेट, लाइक समबडी मेंशन्ड इन द कमेंट्स ना, जो अटैकिंग थ्रेट एलिसन प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्ट बॉल देगा और वो इतना अच्छे से वो लॉन्ग बॉल निकालेगा कि साला he'll find Salah or maybe somebody out there. So I think that is what will be missing today. The distribution of the ball will be missing. Let's see अगर Kelleher कैसा perform करता है. If he performs very well today against Chelsea, then I'm sure that he's ready, then he's completely ready then, because it's a very big test for him today going into this match against Chelsea. True, absolutely. बाबा, एक चीज जब मैं पूछना चाहूंगा, of course it might be kind of controversial, लेकिन the fact being that again lot of things going on, Ukraine, Moscow and Russia etc. Roman Abramovich का news है, तो how will the fans take it in the stadium, you think? मतलब ये pretty sure कि neutrals और Liverpool fans gang up होंगे Chelsea के against, like I know entire world is against Chelsea anyway. It's exactly like you said, it's the whole world versus Chelsea tonight. और एक अजीब सी जल्दबाजी है लोगों के अंदर, they are waiting for Chelsea to lose today so they can gang up on me, gang up on you. DMs में मुझे बहुत लोगों के आए हैं Instagram पे कि बाबा हम वेट कर रहे हैं कि आप हारो, आज आप हारने के लिए तैयार हो। कमेंट सेक्शन से पता आप। हाँ, और and for some strange reason जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, Chelsea come out on top, पता नहीं, more often than not. Exactly. But obviously we have to be realistic also. We are playing a red hot Liverpool team जो भी एकदम red hot form में है, and we cannot get ahead of ourselves. Why is that happening? Is it because of the Russian thing? बिल्कुल। Oh man, oh. मतलब people think कि रोमन अब्रामोविच ने ही टैंक भेज दिए यूक्रेन में। दिक्कत ये है। Literally. हाँ। I think what Roman Abramovich did after that, the step taken by him should be like given more, even though I feel the hold is going to be with him, no doubt. But जो step down किया है, I think it's quite good. I think whatever he did before the match, इतना बड़ा game है, not having your owner, so mentality पे effect रहता है, काफी weird चीज है situation. But then on top of that, people reacting that way is just not fair. नहीं मतलब जैसे हमको ये डीएम्स आ रहे हैं कि आप ऐसी टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हो जो जिसका ओनर इन सब चीज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, जो कि हैज नॉट बीन प्रूवन एनीथिंग बाय द वे, है ना, कुछ भी प्रूवन नहीं है। और मेरे को एक ओनर बता दो किसी टीम का जो दूध का धुला है। इवन शैल्का ने गैसप्रॉम हटा दिया जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद देमसेल्व्स विद एनीथिंग दैट हैज टू डू विद रशिया। इसका मतलब गैसप्रॉम भी खराब है,
मतलब एक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का एयरलाइन स्पॉन्सर भी रशियन है, वो भी खराब है, एवरी रशियन इज बैड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, तो वो चीज हो रही है इस समय, और वो नैरेटिव It's the ऑब्वियसली same सोशल thing. मीडिया, और प्रॉब्लम पता है क्या, लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। द सैड ट्रूथ इज पीपल डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन, बस उनको ये है कि रशिया बैड, चेल्सी बैड, अब्रामोविच बैड, बाबा बैड, अंकित भैया बैड, चिराग बैड, तो चेल्सी हारनी चाहिए, which is not fair in my opinion. Yes, yes. नहीं, obviously it's मतलब like it's the same thing कि अगर terrorism वाला जो बात चलता था कि it's all like I'm getting very political here, I'm sorry if anybody is getting offended, but just वो Muslims के साथ relate होने लग गया था कि if there is any Muslim then it gets related to that, तो उसी तरीके से I think this is, I know serious situation बहुत है, nobody is supporting what Russia is doing here, obviously everybody wants no war, but I was saying war, oh my god, football ने ना दिमाग खराब किया है, my god. So obviously nobody wants any war here, but then at the end, I think whatever people, the way they react now on these things, I think it's just not fair when it comes to these things, because at the end nobody is supporting Russia on these things. Baki to yaar, it's just not fair yeah, sometimes. Obviously you have to face all this. true, absolutely. यार ये क्वेश्चन है ऋग्वेद से, सो चिराग, ये माउंट जब भी पुलिस के साथ खेला है ना, स्ट्रेंजली देखा हो कि पुलिस राइट विंग पे खेलते हैं और माउंट लेफ्ट विंग पे खेल जाते हैं बहुत बार। आई एम होपिंग वो नहीं हो, लाइक यू थिंक दैट कैन बी अ स्ट्रेटजी फॉर टूकल टू सरप्राइज लिवरपूल? आई होप नॉट, ना? इट विल बी ऑब्वियसली इट विल बी अ फ्लूइड फुटबॉल, मतलब वो हमारे फ्लैंक स्विच तो बहुत कॉमन होते हैं, हर 10 मिनट बाद आप देखोगे फ्लैंक स्विच हो रहा होता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई फील सो कि पुलिसिक विल बी स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द गैप बिटवीन वैन डाइक एंड ट्रेंट इज वेयर वी नीड दैट स्पीड, दैट सडन पेस, बर्स्ट ऑफ स्पेस जो हमें चाहिए वो उसी साइड पे चाहिए, एंड लास्ट 2-3 गेम्स में पुलिसिक अपने वन ऑन वन डुअल्स उधर ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, सो वी नीड हिम टू गो ऑन द लेफ्ट साइड, एंड माउंट विल बी ऑन द राइट टू प्रोवाइड those passes कह लो, या फिर to just give the support to Havertz, या फिर कुछ भी कह लो, it will be more Pulisic on the left and Mount on the right. That is what I wish. True. Yes. And by the way, yes, जैसे आपने देखा कमेंट में भी 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे आपको मिलेंगे ड्रॉप बाबा, वॉच अलोंग, एंड ऑफ कोर्स बाबा आई जॉइन यू सेकंड हाफ में, ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ के लिए नो आई विल बी ऑन इंडी कॉप, लेकिन सर्टेनली मजा आने वाला है बाबा, वील सर्टेनली वॉच यू एट द फर्स्ट हाफ एंड विल जॉइन यू एज वेल, पीपल ज्वाइन करना प्लीज ऑन बोथ द वॉच अलोंग, एंड सर्टेनली सी यू सून, अप द चेल्सी, कम ऑन, बाय, अप द चेल्सी, Bye, all the best Baba, all the best. All the best. Bye. Thank you. Okay, so people again, यार बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम एंड प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, अगर बाय चांस आप नहीं सब्सक्राइब किए हो। काफी बार हमें क्या होता है, हम वी वॉच अ लॉट ऑफ चैनल्स और वी थिंक दैट वी हैव सब्सक्राइब, लेकिन बाय चांस आप नहीं सब्सक्राइब किए, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इंडी कॉप, टू फुटबॉल मेडिको, एंड ऑफ कोर्स टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, बट आदिदेव, गुरुज्ञान एंड रॉक बाबा भी, आई थिंक आदिदेव, गुरुजी को आई थिंक देयर इज सम इश्यू, सो होपफुली ही विल सॉर्ट इट आउट एंड कम इन अ फ्यू मिनट्स. Lekin, I think again there are a couple more questions. I think here we had just Viola asking why is Ziyech not in the squad. So Ziyech is definitely injured. नहीं तो हो ही नहीं सकता था कि he wouldn't have been in the squad. Unfortunate for Chelsea. Like I've been saying, वो CHFC हो रखी है लास्ट एक महीने में. आज Mount FC हो जाएगी वापस. Looks like. I'm just hoping that. But certainly that is something that it's a huge kind of miss. TCSB, by the way, shout out to them as well as Sports Kappa and a few other channels जो chat में भी है. Abramovich mastermind है, people are underestimating the man, वो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब वो it's not in his hand. That's the saddest part. That is certainly, but yes, of course, people, I think चिराग को भी जाना पड़ेगा, but चिराग, before you leave, let's actually quickly get to the main thing जो है predictions, और खाली predictions नहीं, by the way, people in the chat also, first of all यार, Atwell जो है referee, will he make a mistake or not according to you, major one, or obviously I'll tell you, if in case he is not making a mistake, either Klopp or Chelsea fans will blame him, because Chelsea का manager blame नहीं करता, neither Liverpool के fans करते, it is Chelsea, Liverpool का manager and Chelsea के fans who are against the managers, वो fix है, जो टीम हारेगी उसके हम रेफरी पे डालेंगे, हमारे यूएसपी है दोनों क्लब्स का, चलेगा हमें, बट टू बी ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस 2-0 चेल्सी, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं हमेशा से 2-0 चेल्सी बोल रहा हूँ सिंस द टाई हैज बीन मेड, सो आई फील सो इट विल बी 2-0 फॉर चेल्सी, एंड आई होप नॉट इन द, आई डोंट थिंक कि मतलब पेनल्टीज में एक्स्ट्रा टाइम में ना जा रहा हूँ, पहले ही 2-0 हो जाए, शांति से सोने देना मुझे आज.
एग्जैक्टली। और बाय द वे चिरा के चैनल पे देयर इज वन फुटबॉल मेडिको पोस्ट शो भी है, तो प्लीज डू जॉइन अस फॉर दैट। सो लाइक आई सेड, वॉच अलोंग्स ऑन ड्रॉग बाबा ऑन इंडी कॉप एंड फुटबॉल मेडिको पे पोस्ट मैच शो होगा। लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। सो चिराग, लेट्स सी हुज प्रेडिक्शन कम्स राइट। होपफुली यार इस बार तुक्का लग जाए हम में से एक जन का। आई थिंक लास्ट टाइम अपन दोनों का हुआ था सही यार, तो दैट्स समथिंग दैट मेरे चैंपियंस लीग के सारे प्रेडिक्शंस I ठीक would go थे, with. मेजर मैचेस। Right, absolutely. But yes, thanks a lot, भाई। thank मिलते हैं you फिर so वॉच much. अलोंग पे एंड After that post match करते हैं, almost with the of same course. panel with 2 additions or 2. Both Nitika, Ankit Bhaiya and Guruji and Drog Baba will be there, and few more people who can join and we'll see. So thank you so much, guys. Thank you, Ankit Bhaiya, for calling. Always a Okay, pleasure. bye. All the best. Bye bye. Same to you. I hope. I wish you luck, but I Liverpool don't. wins. I wish you luck, but I don't. नहीं वो सेम टू खाली वॉच अलोंग के लिए था, not for the match. Exactly. Right, Thank you so right. much. Like, no pun intended, Nitika. Like, you know what I mean, right? I think it's always a good banter on our channel. Like, we all kind of follow all the clubs, right? What subs do you expect in the match and at what time? Like, ये नितिका से पूछते हैं, चलो लिवरपूल की बात हो जाती थोड़ी। तो नितिका, let me actually try and show the Liverpool bench again. और I think Curtis Jones injured है, and I think even एक और जन है, कौन injured? I think it is Firmino. Firmino is injured, yes. तो वो एक बड़ा मिस होने वाला है। तो do you see Keita or do you see like anyone else? Maybe I think Elliot भी injured है, right? हार्वी एलियट नहीं है ना लाइनअप में भी। नहीं, हार्वी यार एलियट का ये देखो समझ नहीं बेंच। आया कि क्या हुआ था, लेकिन नहीं है या देखो ये या बेंच है आपका, दिख रहा है तो। या आई थिंक ओरिगी है, दैट सॉरी ओरिगी इज अ सुपर सब ना आपका। हाँ, हाँ। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर मान लो मिडफ़ील्ड वर्क नहीं कर रहा है एंड चेल्सी पूरा आउटप्ले कर गया हमको मिडफ़ील्ड में, देन वी माइट ब्रिंग कीटा। कीटा को हम लेके आ सकते हैं। आई ऑल्सो कैन सी एन अर्ली सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम क्लॉप, लाइक अगर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, आई कैन सी दैट ही कैन मेक एन अर्ली सब्स्टिट्यूशन एज वेल। बट शायद 45th मिनट के बाद अगर नहीं वर्क किया तो 55th मिनट पे ही विल मेक द चेंज फॉर श्योर, अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली। सपोज हमारा लीड है फर्स्ट हाफ में, देन आई थिंक द चेंजेस एंड वी आर कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल आफ्टर द second half starts, before the second half starts. So, and then after that, I think that we'll make a substitution at 75th minute or something, not before that, just to control the game and bring in fresh legs to press more. So I think that is how it will go. I can see Keita in the midfield coming. I can see Luis Diaz. I don't know why. I can see Luis Diaz. Origi मैं last के 20 minutes में देख सकती हूँ, but before that I can see Luis Diaz can come. अगर we don't Luis Diaz see, is starting. oh sorry, Luis Luis Diaz is Diaz है, starting. sorry, I mean to Origi say no, I mean to say Jota. Minamino. तो जोटा, Minamino. like देखो जोटा is someone that we agreed, we made a combined 11, I think couple weeks back itself. Yeah. We actually put Jota up on priority over Sadio Mario. I remember in that 11. I know वो injured था and he's come back. लेकिन the fact that now you have Harvey Elliott missing and whatnot, right? Yeah. Considering that, don't you think Jota should be brought on क्योंकि he's your, as in fox in the box? Performing very very well. What I feel is that he has been performing. Hi Adidev भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, कंटिन्यू। I think that Jota has been like the person for us, the guy for us. But since अभी injury से आ रहा है, I feel that Minamino is that Carabao king. He has like scored in every match that there is. तो Carabao में जितना हमने खेला है, तो Minamino का फॉर्म बहुत अच्छा है Carabao में। तो मुझे लगता है कि अगर Minamino को लेके आएंगे हम एज अ सब्सटीट्यूट, शायद वी कैन सी समथिंग। आई नो बहुत ही वियर्ड सजेशन है ये, बट आई थिंक दैट Minamino can perform, can seriously perform, because Jota का भी injury के बाद आया है, he needs that game time and has been very brilliant for us, but I can see Minamino also coming in the game. Yeah, I think that's a fair point क्योंकि यार मतलब someone who's actually fit and obviously Klopp knows best, right, in terms of training. लेकिन गुरुजी वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हो। लेकिन हाँ, आई डोंट नो इफ यू गॉट अ चांस टू सी द लाइनअप। ये लाइनअप है आपका 3-4-3। डिबेट पूरा हफ्ता चल रहा था, शुड वी ट्राई मलंग स्टार बिकॉज अलोंसो वर्सेस साला। मतलब जस्ट योर फर्स्ट रिएक्शन, क्या लगता है आपको लाइनअप के बारे में? It's very. I'm glad that Chaloba is back into the setup. When you're putting that right centre back with Aspilicueta, what we can expect is Chaloba can also is a very good passer of the ball as well.
सो थोड़े प्रोग्रेसिव पासेस हम चालोबा से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़े प्रोग्रेशन उधर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ एस्प्लिक्वेटा इज caught up is caught high up, Chaloba has the Chaloba has the ability to cover those spaces as well, because he has those legs. He has not played much for Chelsea so Exactly. far, so he's kind of pretty fresh. So I think he has the legs as well. So I think that is a pretty good decision to start Chaloba. Also, अब Mason Mount की बात करें तो Mason Mount coming back is massive, because Mason Mount, we've missed him because there has been no. It's not because the fact that he was very good when he got injured. It was just because when he got injured, ball progression became a huge problem for us, because our central defenders were tasked with the job of uh, making those progressive passes. So Mason Mount in the mix just मतलब जो responsibility है on the defenders to probably make those progressive passes lessens that responsibility to some extent. तो इसलिए ये जो चीज़ें ये मुझे काफ़ी सही लग रही हैं. But I'm still pretty skeptical about Salah versus Alonso. Yes, मतलब वो मैं sports talk with Mahim, if that is the handle, that the real handle है, तो वो भी मैं expect ही कर रहा हूँ कि लिवरपूल जीतेगा. But if we pull off an upset also, I will not be surprised, because we have a certain penchant for cup finals. So that is what I'm expecting. But I'm very scared about Alonso versus Salah. Yeah, exactly. Matlab, I was kind of, hoping that doesn't happen. But again, matlab, Kante, agar he comes up with, another Kante that he usually does himself, that is something the only hope. Lekin, I know, Nitika, आपके watch along maybe, I think just a few minutes left. Well, I'll join you as well. Lekin, looking at those lineups, and हम बात किए about basically what happened with Roman and the crowd, maybe booing or maybe, kind of supporting, I don't know. Do you think, like, going with that, would you like to change your predictions than what we spoke? What are your predictions, like, in terms of the Like, goal I'm going scorers, and what do you to think happens? I'll go with the same prediction that I've had till now. I think that this Roman Abramovich wala thing, whatever has happened, is going to give added bonus to Chelsea, because that mentality, that mindset is going to kick in, at this point of time, that they have to win it. Just like Baba said it a few minutes back, that, when Chelsea, it's not expected from Chelsea, then Chelsea does its Chelsea thing. Yeah, we get together That's when kind of thing. exactly, and that unity brings a lot more out of players when it comes to that, when it comes to the situations like these. So that's why I feel that I won't like to change my prediction here. So I'll go with the 2-0 win for Liverpool only abhi bhi. तो मैं prediction तो change नहीं करूंगी. I think that Liverpool can do this, and we have a very solid squad, and we have good bench. So I'm going to go for 2-0 here for Liverpool. Okay, interesting. Again, people, like आपने सुना है, basically we've had two nils अभी on the panel, and we'll get to Guruji as well. लेकिन हाँ, I know Nitika आपको जाना है and to get ready for the stream, and we'll definitely watch along. That'll be very interesting, people. We'll have, like, me being the minority Chelsea fan in a Liverpool panel. काफी interesting रहने वाला है. But again, that's for the first half. And second half, I'll move over to drop Baba. But yeah, certainly, very great to have you, Nitika. Wish you all the best for the watch along, and हम मिलते हैं फिर बात करते हैं मैच की और. Thank you. Bye, guys. All the best. Bye, Bye bye, all Guruji. the best. Bye. Bye. Thank you. Okay, so Guruji, just continuing our conversation. यहाँ पर तो हमने बात की थी, बाबा और चिराग ने भी बात की थी about Havertz, obviously being that floating role जो हम prefer करते हैं in terms of gameplay, more fluent football होता है with Mount coming back. I know Ziyech unfortunately injured है, लेकिन you think there's an element of surprise कि maybe, I know, all three can play the false nine if they really want to, Mount, Havertz and Pulisic. So would Tuchel would want to There is surprise no with element of something surprise. No. like There is अच्छा. no element of surprise. There is no element of surprise. It's pretty clear Havertz is going to play false nine, Right. and I'm expecting that to happen. It's as it is shown in a lot of other media channels. Lineup जैसे दिखाया है, वैसे ही रहेगा mostly. That the lineup is sorry, not the lineup, sorry, the tactical formation is going to be in that particular scenario, or in that particular context. So I don't think so anything is going to change. No element of surprise.
The only element of surprise, as I said, would be if Alonso manages to probably get hold of Salah. That's all. And substitutions wise, well, James finally being back. Well, I'm pretty sure James will be. James introduced at will some get a point. run in. James will get a True. run in. I think 70th minute, but I think James gets a run in Mhm. for probably a Nathaniel Chaloba. As Yeah, Plicota tucks in, and Reece James gets a run in there. If 70th minute ke pehle he gets a run in, that means that we are in trouble. Okay. So True. that means we're in trouble. So yeah. Exactly. यार And मैं I think, पूछना and भूल गया बाबा से. I'm also Yeah. betting that Callum Hudson-Odoi will also get will get some game time, and Callum Exactly. Hudson-Odoi will be. I think there will be at least a moment where Callum Hudson-Odoi is going to Have a chance. give us a glimpse of his quality in this game. I'm 100%. guessing that will happen because the high line that Liverpool will keep, Callum Hudson-Odoi ki pace can probably trouble that. Yes, his final decision making is questionable as always, but I'm thinking that that particular high line and Callum Hudson-Odoi's pace is enough to probably make us feel that yes, वो एक मोमेंट कैलम हडसन-ऑडोई का बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, so to speak. So yeah. Absolutely. मतलब वही है ना बाबा से, मतलब that was $1 million question जो पूछना चाहिए था, but हाँ, I think you hit the nail on the head because I think Callum Hudson-Odoi kind of is a game changer if he really wants to, or Lukaku brings a different element as much as कितना भी बोले. The thing is he has scored those 2 goals that he did because he had that header in him. He had that fox in the box mentality. So I'm seeing like you said, Reece James, Callum Hudson-Odoi and Lukaku. लेकिन I think 3 substitutions है कि 5? I think final में 5 है, right? An extra time included. I think I'm not too sure. Anyone in the chat, अगर आपको पता तो please if you can confirm that. From what I understand, what I remember is like in extra time you can make a couple more subs and then you have the penalties of course. लेकिन Kepa, you also are looking at him being a super sub for penalties if need be. He keep Mendy today. अगर जाता है तो. Kepa, yes, super sub is definitely there. मतलब penalty में I really feel that Kepa gives us that edge. So yeah, I mean that is something I'm looking at. Perfect. And Liverpool are favorites, let's be honest, but that suits Chelsea. Agree, Guruji, as in terms of basically what has happened off the pitch as well as team bhi dekha jaye to. I think they have a lot of informed players and fitness. I think they are probably having the edge. So what do you think will be the scoreline and match scenario? I think it would be great if we just take a 0-0 and then take it into penalties, or a 1-1 and take it into penalties. That is ideal for us. But anything better than that is just amazing. But what I'm predicting realistically is probably like a 0-0 scoreline for us into penalties. Interesting. Yeah, एक point हमने बात नहीं की है when Nitika's around is about Trent. Trent is basically great going forward, right? लेकिन defensively हमें पता है there is an element of him जो vulnerable है. आज Matip खेल रहा है, तो Konate has more pace compared to Matip. Do you think that can be the best way? But Matip's passes into the wide regions, into the opponent's wide regions is a very underrated weapon of Liverpool. So I think that is going to be very evident today. His passes, his long balls are going to be a very proper weapon today. We are going to stand back a bit, I think, after that 5 second 10 second wala jo press wala routine hai, we're going to stand back a bit, and us time pe if Matip is on the ball, he is going to play a lot of progressive passes in that particular situation if we offer him that situation. So that is a threat for us. So इसलिए Matip defensively अगर सोच रहे हो कि he's going to be a liability, but I think so he's going to make up for it offensively. That is what I'm predicting, but let's see. Interesting. लेकिन yeah, Matip he goes on his runs as well, na Guruji. Like someone that who kind of bombs forward. Like maybe today because of the fact that it's a final, I don't know. Like if he's been asked to stay back, I think Liverpool will not change the mentality. I think you're right. Probably it's about us kind of defending and keeping that score line and not just that as in maybe hitting on the counter. वहाँ पर Pulisic is someone that I'm hoping कि यार finally एक final में I think FA का final था ना जहाँ पर उसने goal score किया था, बेचारा injured हो गया था. That is something that I'm really hoping that it's Pulisic's night, and I think Mason Mount not being 100%, like he's not played enough games, put it that way. So yeah, let's see if someone else comes on, and I think also one shout out is like
because of the fact that they are playing with 3 midfielders in the center of the park. So maybe, just maybe, because of strength, body, or aerial ability as well, Loftus-Cheek को लाए गुरुजी. Do you think him playing a part? No, depends, Nahin? man. Okay. It depends, man. Not right now. I think the three substitutes that we would be probably looking at, from my perspective, was definitely Kepa, Callum Hudson-Odoi, and Chris James. Correct. Anyway, fair point. And again, thanks a lot, Guruji, आने के लिए. I know that we have to go on watch alongs as well. Certainly, बहुत मजा आने वाला है. And this is one of those finals. Again, I am hoping that whatever has happened in the last 24 hours gets the team together, gets the club together, like we always do. And we don't want a case where as in we kind of hear bad things, because वो मौका मिल सकता है opposition fans को. But at the end of the day, it's a game of football, so people do enjoy it. आई होप सब लोग को अच्छा लगा प्री शो, बिकॉज हाँ, हमारे जो भारतीय टेलीकास्ट है अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा कोई प्री शो. सो आई थॉट टुडे लेट्स डू इट अ प्रॉपर प्री शो, एंड लेट्स सी इफ यू गाइस लाइक इट, वी विल ऑलवेज डू इट. Do comment below, and yes, do take that poll. And any last words, Guruji, for the match finally? Keep the blue flag flying, guy. 100%. Anyway, people, thanks for joining. Do like the stream. Or yeah, Adidev Gurugyan, please do subscribe. Yes, very soon he will be coming up, like he said, with videos on that. और हम मिलते हैं गुरुजी फिर watch along पे. Take care. Take care, man. Take care.